Right, gentlemen, good morning. In the second part of learning from quotes, we move on to what we can learn from Field Marshal Sam Manekshaw. Now, we all remember Field Marshal Sam as the main architect of 1971 victory. He is one of the most revered military personalities of the country. But more importantly for me, he should be remembered for displaying moral courage. Because had he not taken a firm stand that day, the इतिहास कुछ और होता. खासकर जिस देश में हम विभीषण को तिरस्कार के रूप से देखते हैं, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और भीष्म और कर्ण के एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं जो उन्होंने दे रिमेन्ड अ म्यूट विटनेस टू व्हाट हैपेंड इन दी कोर्ट रूम विद द्रौपदी, और विदुर को याद नहीं करते हैं जिन्होंने अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने ओपोज किया और जो रिजाइन करके चले गए, हु डिस्प्लेड मॉरल करेज. उनको हम याद नहीं करते, वो हमारे रोल मॉडल नहीं है. Now, therefore, Field Marshal Sam Manekshaw का जो वो एक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने मॉरल करेज के बारे में इसीलिए व्हेन आई अटेंडेड हिज वर्कशॉप, हिज लेक्चर ऑन लीडरशिप क्वालिटीज, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट ही नरेटेड, दैट इज मॉरल करेज. एंड ही सेड it is the ability, moral courage is the ability to distinguish right from wrong, and having so distinguished it, be prepared to say so irrespective of the views held by your superiors or subordinates, and also be prepared of consequences to yourself. अर्थात ये आपकी क्षमता है कि आप क्या सही है और क्या गलत है उसमें उसको आइडेंटिफाई करें, और एक बार कर लें तो वैसा बोलने की क्षमता रखें, चाहे आपके सुपीरियर्स उस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी व्यू रखें या आपके सबॉर्डिनेट्स भी. और इसका उदाहरण वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे समझना. Now this was in 1971, maybe March, April, I don't remember what he narrated that day. It was a long back when he took this lecture, and I had attended it as a major then. He said this was in 1971, probably perhaps end of March or April. Mrs. Gandhi called for a conference. जिसमें चौहान साहब होम मिनिस्टर थे, स्वर्ण सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, और चौथे थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ. तो जैसे ही ये एक बड़े से हॉल में बैठे थे, मिसेस गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो ब्रिस्कली चलती हुई आई और बोली कि सैम, आई थिंक दिस इज इनफ, आई थिंक वी शुड मूव इन नाउ. सो नाउ दिस शी वॉज टॉकिंग अबाउट दी ईस्ट पाकिस्तान, दी सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान, जहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज हमारे देश में आ रहे थे. तो सैम मानेकशॉ बोले कि मैम, डू यू मीन टू से वी शुड गो इन फॉर वॉर? सो शी सेड यस. सो सैम मानेकशॉ सेड, मैम, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट एट दिस टाइम. एंड मिसेस गांधी, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, it was not easy for her to accept this no from one of her team members in front of the cabinet ministers. So she immediately got up and said, then why are we sitting here? And she walked off. अब ये चारों लोग जब उठे वहाँ से और एक एक करके वो दरवाजे से बाहर जा रहे थे, तो बाबू जगजीवन राम जो थे, अंत सबसे लास्ट में चीफ थे, तो बाबू जगजीवन राम जब निकलने लगे तो बोले कि जनरल साहब ये आपने क्या बोल दिया. एंड देन ही रियलाइज्ड, सैम मानेकशॉ सेज, ही रियलाइज्ड कि इफ Mrs. Gandhi insists
to go in for war, he will resign on the grounds of poor health. एंड जैसे ही वो डोर से बाहर निकलने लगे तो पीछे से आवाज आई मिसेस गांधी की, सैम कम बैक. इन्होंने मन बना ही लिया था कि अगर इन्होंने अब इंसिस्ट किया तो मैं सीधे बोल दूंगा कि आई एम विलिंग टू रिजाइन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पुअर हेल्थ. एंड एज ही टर्न बैक ही सॉ मिसेस गांधी वॉकिंग बैक टू द सेम चेयर. और ये वापस चल के आए और बोले कि मैम, इफ यू सो इंसिस्ट ऑन वॉर, I am willing to resign on the grounds of poor health. You can have another general. So Mrs. Gandhi said, no, general, tell me, what are the reasons? Why can't we go in for war right now? So General Sam Manekshaw said, ma'am, your illustrious father had a weak-kneed general in 1962 who could not give the correct advice, professional advice, mark each word. Your illustrious father in 1962 had a weak-kneed general who could not give correct professional advice to your father, and as a result, the whole country was humiliated. So Mrs. Gandhi said, don't worry about it, Sam, you tell me your reasons. So he says there are 4 issues he brought out, right? First issue, he said, Indian army is spread over a vast distance. Moving them to their launching pads is going to take time, more than a month, right? There are critical deficiencies. We are still not self-reliant as far as ammunition, critical weapons are concerned. Then there is an issue of China. What if China also intervenes, right? We cannot be fighting on so many fronts. Then lastly, he said, Bangladesh is a terrain which is crisscrossed with nalas and rivers. Now monsoons in Bangladesh sets in late May or early June. Now if we go in for war that time, our whole army will get stuck in those flooded waters and swamps, and we will have the same result. We will be humiliated once again, right? So when he brought out those 4 issues, Mrs. Gandhi understood. Okay. So, and then rest is history. I don't want to narrate that. So, hats off to Mrs. Gandhi to display the leadership qualities, to listen to her team members, and hats off to Sam who stood up, displayed moral courage by giving correct professional advice to the boss. In such a situation, अगर आप देखो, many leaders, many bosses, many managers would have blamed others. बहुत प्रेशर था साहब, मिसेस गांधी वॉज ए डिक्टेटर, वो तो किसी की सुनती नहीं थी. द सेम थिंग इन जो 1962 में लोग कहने लगे नेहरू जी के बारे में, वही चीज हो सकती थी. This is what Sam Manekshaw hinted when he said, your father in 1962 had a weak-kneed general who could not give correct professional advice. Even now it happens. We have not learned from all this. Even now it happened when our troops went unarmed to check whether the Chinese who entered our area have left or not. They went unarmed despite of the fact that the Chinese have come inside. Perhaps had Sam been there, they would not have gone unarmed. That's the difference. We must understand. It happens in all the organizations. Now, we must remember there are certain terms and conditions that need to be adhered when showing moral courage. 1, we should be professionally competent. We should know our job, because we may have to face the consequences at times and resign. Sam was doing the same thing, right? He said, I am willing to resign. So if we are not professionally competent, then we will not have that kind of confidence also. Second, we should be respectful, humble and polite while giving advice. If we are arrogant, the whole show will turn into a clash, ego clash, right? Now, somebody may ask how this quality helps. Look back into history. Is the best. First, recent, Sam Manekshaw, अगर उस दिन सुबह मिसेस गांधी को
करेज, मॉरल करेज डिस्प्ले नहीं करते और करेक्ट प्रोफेशनल एडवाइस नहीं देते तो वो कभी फील्ड मार्शल नहीं बन सकते थे। देश भी ह्यूमिलिएट होता, वो अलग है, लेकिन वो तो कम से कम कभी फील्ड मार्शल नहीं बन सकते थे। और आज हम उनको, वी वुड नॉट हैव बीन टेकिंग हिज नेम विद सच ग्रेट ऑनर, राइट। विभीषण कभी श्रीलंका का राजा नहीं बनता, राइट। अगर भीष्म और कर्ण वो मॉरल करेज डिस्प्ले कर देते तो द्रौपदी के साथ वो अत्याचार नहीं होता और उन लोगों का नाम इतिहास में होता, हमें जस्टिफाई नहीं करना पड़ता। ओके, सो आई विल टेक योर माइंड्स बैक टू अ मूवी, ब्यूटिफुल मूवी कॉर्पोरेट। अगर आपने नहीं देखी, देखिए। उसमें भी अंत में जब वो सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स मिलते हैं तो बोर्ड मीटिंग में जब डिस्कशन होता है कि अपने को जो है किसी भी तरह छुपाकर ये सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतारनी चाहिए, तो बोर्ड मेंबर्स में एक मेंबर होता है कि नहीं, वो बोलता है नहीं ये गलत होगा और वो रिजाइन करके चला जाता है। सारे के सारे लोग फंसते हैं, उनका जीवन तबाह हो जाता है। वही बंदा सुकून से बाहर बैठा था, राइट। सो सबसे पहला तो ये है कि ये लगता जरूर है डिफिकल्ट, लेकिन इससे फायदा अपना ही होता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति is always sought after by the management. Every management needs people who can give a dispassionate view without any fear. Right? प्राइम मिनिस्टर के आगे बोलना, और अगर नहीं बोलते तो क्या होता, ये सब सोचिए कि कैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने बोला, और अगर नहीं बोलते तो क्या होता। 2, one gets a good sleep at the end of the day as he does not have to bear the humiliations. लोग ऐसे व्यक्ति का humiliate नहीं कर सकते, and you get a damn good sleep because you have given your opinion and left. लोग ऐसे व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहते हैं। So remember this quote of Sam Manekshaw, it is the ability to distinguish right from wrong, and having so distinguished it, be prepared to say so irrespective of the views held by our superiors or subordinates and of consequences to yourself. Thank you. Jai Hind.